live session streaming from NALSAR from Justice City. Firstly, would like to apologize for the absence of Lokesh Kaza. He couldn't make it for today's session. He's quite busy preparing for Introbank, NALSAR's quiz festival. And if you have been in the city, if you have been active in the quiz circuit, you know Lokesh Kaza and his quiz antics. So do tune in on Monday and do join him here and hear him talk about his experiences. What we're trying to do here is make a concerted effort to bring all law aspirants in under one platform, under one umbrella, and we're trying to ably guide them to crack law entrance examinations such as CLAT, IELT, LSAT, and so on. Now, we do hope to bring many such videos in the future where we'll put in lessons, where we'll put in our own worksheets out there, and we'll try to interact with as many as you as possible. Today is going to be an introductory session. We aren't going to do much. I'm Sunil. I'm in my second semester of NALSAR. I wrote CLAT the last year and I got into NALSAR. Yeah, so that's pretty much about me. A few standard questions, right? Why would you want to choose law? Well, if you're thinking about law, you should also know that the courses that are offered in most universities are a combination of law with other social sciences. So if you're thinking about an overlap of social sciences and law, that could be an option. And if you're thinking about more an able alternative to medicine or engineering, law could be it, because law affords a lot of other opportunities out there. You can you can be an advocate, you can you can do some litigation, you could join some corporate firm such as Google, Microsoft, Khaitan and Khaitan, Linklaters, all of them have their legal teams. Or you could become a judge and work your way up there. And who knows, maybe you could become a judge in Supreme Court. Right? And well, that was basically it. For me, I wanted to join law because I wanted to take a look at what law is, because I thought legal knowledge is quite, that everyone requires some amount of legal knowledge. Everyone is required to know how a country works, what the constitution is, what the country requires of us, and what it is that we need to do. So that's pretty much it. So there are about 18 national law universities in India, the best of which are NALSAR, which is in Hyderabad, National Law University, which is in Bangalore, NLU Jodhpur, NLU Bhopal, and the list goes on. You also have NLU Delhi, which has its own entrance examination called IELT, AILET. You also have Symbiosis Law College. One of the campuses is in Pune, the other is in Hyderabad. You have Jindal Law School, and you have ICFI, right? So these are some of the well-known law colleges, and the entrance examinations that we'll be attempting, if you want to crack such institutions, are CLAT, CLAT 1, IELT 2. All right. So I'll just talk about CLAT and IELT because those were the only examinations that I wrote last year. A CLAT Common Law Admission Test is a question paper which has about 200 questions. It is divided into 5 sections, them being English, mathematics, legal aptitude, logical reasoning, and general knowledge, right? So English has 50 questions and comprises questions from comprehension passages, grammar, and vocabulary. I tend to see that the vocabulary and comprehension passages tend to be quite tough. Then we have logical reasoning, which has 50 questions. Logical reasoning covers a lot of questions from various topics such as statement assumption, coding, decoding, number series, word analogies, statement conclusion, so on and so forth. Then we have mathematics, which has about 20 questions, and
The level of the questions that are asked is your 10th class level questions. So you will have averages, you will have number series, you will have time and work, time and speed, so on and so forth. You have then general knowledge, one of the, if not the toughest sections in CLAT. You have to prepare for general knowledge throughout the year. So you have questions ranging from current affairs, including legal knowledge, what has happened in the parliament, what kind of bills and amendments have been passed. You will be asked about your geography, history, world organizations, and awards that have been won. Famous people who has died. A lot of people have died in 2016. Quite inappropriate, but yeah. Um, then you have legal aptitude, for which one has to maybe take help from um, a coaching center, because no one can teach you legal aptitude. So what happens in legal aptitude is that you're given a principle. These principles are basically laws taken from our statutes, such as the Indian Penal Code, such as the Criminal Procedure CRPC, and then they'll give you a factual scenario, and then they'll give you four options, and you need to apply the fact to the scenario, and you'll get your answer. Another thing, CLAT is um, all the questions in CLAT are multiple choice questions, so there it's a purely objective based test. There is no subjective reasoning. So that's pretty much it about CLAT. It lasts for about 2 hours. It usually happens. It is conducted by one of the NLUs every year in the month of May. Results come out in the end of May, and then the admission process begins. That's pretty much it. We're still trying this out. Well, if I have to talk about my experience at NALSAR, it has been so far quite wonderful. I've had lot of things to do here, from quizzing to debating to hanging out with my people at my hostel. The hostel life is quite exciting itself. You can see the library behind me. It's quite wonderful. Like, if you do come to NALSAR, you would see how green and beautiful it is. And yeah. Joining me would be Satendra. So yeah. हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कुछ हिंदी में बात करूँगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं लॉ में करियर बनाया जाए। बिकॉज़ आज की डेट में ये एक ऐसा स्ट्रीम बन गया है जहाँ पर एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, बट अब लोग मतलब एक इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट। तो मैं सतेंद्र हूँ। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सतेंद्र है। मैं नालसार में 4th ईयर में हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैंने 10th तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की थी। उसके बाद भी मतलब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक हिंदी मीडियम के लिए भी इस एग्ज़ाम को लिखना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब इस तरह के अच्छे जो राष्ट्रीय लेवल पर जो विद्यालय हैं, मतलब लॉ स्कूल्स जितने हैं, इसमें दाखिला इतना मुश्किल नहीं है। स्कॉलरशिप भी मिलती हैं। इसके बाद आप अगर तैयारी करते हैं और लगभग 1 साल की तैयारी में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे कॉलेजेस आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा लॉ क्यों करें। लॉ करने के कई सारे कारण हैं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लॉ अप्लाई ना होता हो। सबसे बड़ा कारण मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ऐसी बीट इंजीनियरिंग, बीट डॉक्टर, ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको लॉयर की ज़रूरत ना पड़े। मतलब डॉक्टर की जब ज़रूरत पड़ेगी जब मैं बीमार होऊंगा। मतलब घर तब इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मुझे इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, बट मैं मतलब हर किसी को लॉयर की ज़रूरत पड़ती है इन अ वेरी सटल वे। मतलब बहुत आसान शब्दों में कहा जाए कि कुछ भी अगर मुझे साफ़ हवा नहीं मिल रही है, मैं लॉ को यूज़ कर सकता हूँ। मतलब बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ। ये तो रहा मतलब बहुत खुले शब्दों में आसान उसमें बताना कि लॉ एक्चुअल में मतलब आसान भाषा में बताना। लेकिन आप अगर इसके पैकेजेस पर जाएं, जो आपका करियर ऑप्शन जिसे कहते हैं कि हाँ लॉ के बाद क्या,
तो वो भी आज की डेट में बहुत कुछ है, मतलब लॉ के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जज बन सकते हैं, जैसा कि अभी मेरे जूनियर ने बताया, सुनील ने बताया था। आप जज बन सकते हैं, आप बड़ी बड़ी फर्म्स में आप लॉयर हो सकते हैं, आप लीगल कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप एनजीओ में काम कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, बहुत कुछ। मतलब आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। मतलब ये आप यूएन में काम कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसे बोलते हैं हम। आप बहुत कुछ है, मतलब एक एक कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ रुक जाएगी, मतलब लॉ का करियर यहाँ रुक जाता है, रुकता कहीं नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉ, मतलब सबसे सुंदर बात मुझे जो लगती है। और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, और वो बहुत नेचुरल होता है। मतलब वो स्वाभाविक है कि आप, अगर आपको कानून की आपका मतलब साक्षरता है, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंदी में बताना चाहूँगा, क्लेट के एग्ज़ाम और ऐसे कई एग्ज़ाम हैं, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं जो मतलब अ, हम हैं, जैसे एक है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए होता है, क्लेट होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जूनियर ने बताया, सुनील ने, के लगभग 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं अब, और कुछ एक बन भी रही हैं, जैसे नागपुर में एक बन रही है। तो इंग्लिश और एक साल की थोड़ी सी तैयारी मैं समझता हूँ काफ़ी रहेगी इसके लिए। अभी एक टॉपिक जैसे लेते हैं जीके। जीके के लिए मतलब अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं, धीरे 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 आपकी इंग्लिश सही होती है। मेरी खुद ऐसे ही हुई थी। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि किसी ने पढ़ाया। अगर मतलब अगर कहूँ कि लॉ के लिए ज़रूरत थी तो मैं यहीं आके सीखा हूँ, लॉ स्कूल में। तो एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश मैं सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़पेपर से सीखा था, सही कहूँ तो। और बाकी बस ये है कि आप मैं तो ये कहूँगा, आप लॉ को चूज़ करो एज अ करियर। एंड सब लॉयर्स, मतलब एक एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा मान सम्मान मिलता है ना। हम लोग कहीं भी मतलब लर्नड काउंसिल बोलते हैं। मतलब ये शब्द हम डॉक्टर के लिए नहीं लगाते, हम इंजीनियर के नहीं लगाते, बट लर्नड जो शब्द है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा, ये शब्द हम लॉयर्स के लिए लगाते हैं, जजेस के लिए लगाते हैं, किसी और के लिए नहीं लगाते। सो मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कारण हैं जो बहुत ज़्यादा हमें आकर्षित करते हैं इस चीज़ की। और फिलहाल मैं इससे ज़्यादा कुछ आजकल ये एक तो बहुत आसान भी हो गया तैयारी करना। इट्स लाइक आपके पास फ़ोन में इंटरनेट है, इंटरनेट ऐप्स हैं बहुत सारे, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, हमारे साथ। सो लॉ स्कूल 101 एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है इधर हैदराबाद में। हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आगे और अच्छे वीडियोस लेके आ सकें, जहां पर आपको एक सटीक जानकारी हर विषय के ऊपर दी जा सके, चाहे वो लीगल एप्टीट्यूड हो, चाहे जीके हो, मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।